Last 15 days since we are witnessing some conspiracy against Rahul Gandhi. On 11th September 2024, first of all, Mr. Tarvinder Singh Marwa he issued assassination threat against leader of opposition, Sri Rahul Gandhi, where he said that राहुल गांधी बसा जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हाल हुआ. On 16th September 2024, Sanjay Gaikwad MLA, Shinde Sena, he announced a bounty of 11 lakhs rupees for anyone who will cut the tongue of leader of opposition, Sri Rahul Gandhi. On 15th of September, one Union Minister, MOS, Levanit Bittu, publicly told leader of opposition Rahul Gandhi is the number one terrorist in India. Then UP government minister Raghuraj Singh, on 16th September itself, publicly said that leader of opposition Rahul Gandhi is the number one terrorist of India. Day after, Shiv Sena MLA offered a cash prize of rupees 11 lakh for chopping of Congress leader Rahul Gandhi's tongue. BJP Rajya Sabha MP Anil Bonde said that Rahulji's tongue should be scalded. What he has said about the reservation. These statements are merely not a statements. This is clearly a threat, live threat to Honorable Leader of Opposition Rahul Gandhi. This happened from 11th September onwards. Already, all the statements happened within 1 week. Now 1 week is over. We expected that the leadership of the BJP, Honorable Prime Minister or Home Minister, will come forward to correct these people or ask them to have an apology on this issue. This is what we are expecting from a democratic country. But yesterday, Honorable Congress President wrote a letter to the Prime Ministers with great concern. After that letter also, Union MOS, Mr. Bittu, had given a statement which is more dangerous than earlier. That means, what does it mean? For the last 1 week, the entire Prime Minister and Home Minister and then the Union government is keeping silence. Again and again are repeating this type of statements are repeating. We think that this is a clear conspiracy under the knowledge of Prime Minister and Home Minister. You can see that. Now the Rahul Gandhi, the people of India liked him very much, especially poor people of India beyond caste and religion. The issue which we are taking towards the country, the people of India are liking that. The BJP didn't like this type of popularity of Rahul Gandhi at all. That we can understand. But is this the way to react on that type of issues?
you had withdrawn his SPG protection. We didn't complain anything, Congress party. Immediately after the disqualification, without an hour, you told him to vacate the house. We didn't told anything against that. We are not डरने वाला नहीं है कांग्रेस वाला. We are courageous. You can see that 4,000 kilometers from Kanyakumari to Kashmir, Rahul Gandhi walked. Whether Modi can walk even 40 kilometers? In Kashmir, what we have witnessed, one day, that too in Pulwama, entire security forces withdraw. That time also Rahul Gandhi walked. We didn't have any fear psychology. But we would like to know from the government, what is your game plan on Rahul Gandhi? Because you are inspiring your people, you are motivating your people to attack Rahul Gandhi. Your leaders doing every day this type of statement, you are keeping silence means you are inspiring your people, you are motivating your people to attack Rahul Gandhi. We had a very emotional past experience of Indira ji and Rajiv ji. I think entire Congress people are calling us. They are all quite emotional. The people we loved in entire Indians, loved Rahul Gandhi, are also watching all these things. And these two statements of Rahul Gandhi which they are narrating, totally bogus, totally false. What Rahul Gandhi told in Washington about Sikh community, I am quoting that. The fight is about turning to a Sikh member of the audience. Gandhi asked for his name and then said, the fight is about whether he is a Sikh, is going to be allowed to wear a turban in India, or whether he is a Sikh will be allowed to wear a kada in India, or whether he is a Sikh is allowed to go to a Gurudwara. That is what the fight is about, and not just for him, but for all religion. But not for him, but for all religion. He is narrating the hatred atmosphere of this country. Now they are making it as an anti-Sikh statement. Same way, he talked about the reservations. There was a complete misleading statement they are providing. On the basis of that misleading statement, they are making a narrative and they are openly threatening Rahul Gandhi. There were all over India, entire Congress people, we are thanks to India leaders also, they are in a reactive mood. If the government of India is not going to control all these things, we didn't have any fear. We know how to save our leader. But the BJP has a moral responsibility to react on these things. This type of threatening, this type of life threat to Rahul Gandhi, Congress party is taking in the utmost serious manner. If we are also thinking in the same lane, our party workers asking to us, then we will also go to the BJP minister's house and BJP MLA's house. And that we will also do the same thing. Only one thing I am telling, whatever happened is happened. If they are not controlling now, the future course of action which is happening, we are not responsible. The BJP leadership only responsible for all of these things. This is what I want to tell. Now I am requesting Honorable Singhvi ji. Thank you, sir. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेणुगोपाल जी, दोस्तों,
बिट्टू जी, हमें भी पता है कि नया नया मुर्गा और जोर से बांग देता है। रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर वो पुरानी कहावत याद आ जाती है, नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, नया मुल्ला ज़्यादा अजान देता है। दिस डेस्परेट अटेम्प्ट टू शो योर लॉयल्टी फॉर अ पर्सन हुज एंटायर करियर, एंटायर नेम एंड फेम इज बिकॉज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस इन द कांग्रेस पार्टी। लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष की बात है, मैं ज़्यादा व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता। मेरे वरिष्ठ मित्र वेणुगोपाल जी ने आपको 6-7 उदाहरण दिए हैं, मेरे पास और भी हैं, मैं उनको हिंदी में दोहराना नहीं चाहता, विस्तृत रूप से हैं और नाम भी हैं। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है कि क्या दिखाता है आपको, क्या दर्शाता है इस सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में, इस प्रधानमंत्री के बारे में, इस गृह मंत्री के बारे में, इस देश की गणतंत्र की परिभाषा के बारे में। ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण साजिशनुमा वातावरण है, सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए, राहुल गांधी के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए। और ये उकसाने की राजनीति है, ये हिंसा के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है, ये एक जंगल राज के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप इस गणतंत्र की परिभाषा चाहते हैं, भय की परिभाषा, घृणा, हेट्रेड की राजनीति, असंवैधानिक वार्तालाप की शैली। और इन सब के साथ ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सन्नाटे वाली चुप्पी। सन्नाटे वाली चुप्पी नंबर 1 की और नंबर 2 की। और अगर कोई समझदार आदमी भी बीजेपी के अंदर से, वहां भी समझदार आदमी है कुछ, अगर एक भी समझदार आदमी बीजेपी के अंदर भी इस बात का खंडन करता है या भर्त्सना करता है, जो कि पूरे देश को एक आवाज में करनी चाहिए, तो मोदी जी और माननीय शाह जी और बीजेपी उनको निष्कासित कर देंगे, उनको निलंबित कर देंगे, उनके प्रमोशन को रोक देंगे, उनको विक्टिमाइज करेंगे। ये नहीं कि जिन लोगों ने ये बोला है उनको गिरफ्तार करना चाहिए, कानून के अंदर गिरफ्तारी तो दूर, इन लोगों के प्रमोशन का रास्ता ऐसे वक्तव्य हैं। ये वक्तव्य है पासपोर्ट, प्रमोशन का पासपोर्ट, अपने फायदे के लिए, बोनस लेने के लिए, दंडित होने के लिए नहीं। आप सोचिए, किसी देश में अभी एक ऐसा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ और देशों में और जगहों पे, तो पूरे प्रतिद्वंद भी हो तो भी वहां के उच्चतम लोग इस बात की भर्त्सना करते हैं, कहते हैं कि इसका कोई जगह नहीं है गणतंत्र में। एक वाक्य, एक शब्द नहीं निकला माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या किसी वरिष्ठ नेता से, वाक्यों से नहीं निकला डर के मारे, भय के मारे। लेकिन इससे संदेश क्या जाता है? संदेश जाता है कि और करो, और करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत दयनीय हालत बना दी है इस लोकतंत्र और गणतंत्र की। लेकिन हमें गर्व इस बात का है कि अभी भी इस देश में कुछ कानून बचा है, कुछ न्याय बचा है, न्यायपालिका बची है, ढांचे बचे हैं, संस्थाएं बची हैं, और हम हर कानूनी तरीके से उसका प्रयोग करेंगे ऐसे लोगों को सही रूप से कानून के अंतर्गत दंडित करने के लिए। अगर वो समझते हैं कि इस देश में कोई कानून नहीं है, अगर वो समझते हैं कि जो कानून के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, जो अहम पदों पे बैठे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, उससे वो बच जाएंगे, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक कानून इतना लंगड़ा या लूला नहीं हुआ है, अभी तक कानून इतना बहरा या अंधा नहीं हुआ है जितना आप समझते हैं। हम कानून के दरवाजे खटकाएंगे, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जो कड़े से कड़ा दंड होता है संहिता के अंदर, जो कड़े से कड़ा दंड होता है, वो हम दिलवा के छोड़ेंगे ऐसे लोगों को।
लेकिन ये काम न मुझे करना चाहिए, न वेणुगोपाल जी को करना चाहिए, न कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। ये तो अग्रिम पंक्ति में आकर मोदी जी को करना चाहिए था, उससे उनको सराहना मिलती। लेकिन अंदर का द्वेष, अंदर की भावना, अंदर की गुस्सा, अंदर की घृणा इतनी ज्यादा है कि वो करने में बेकाबिल हैं। ये दुर्दशा है, ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस पद का। और ये एक चीज और दिखाता है, ये दिखाता है कि बीजेपी इज अ पार्टी इन पैनिक। These statements demonstrate that. For the last decade, every time Rahul Gandhi has raised his voice on any issue about a community, about fear-mongering, about minorities, the BJP has gone into panic mode. Look at the supreme irony. And this they have done when Rahul Gandhi raises his voice about SCs, STs, OBCs also. They have only responded in one manner, calling him anti-national. Look at the supreme irony of this. This irony is very, very funny, sad and ironical. Please ask any BJP person, when those 3 black farmer laws were passed, what did the BJP party say about this community, about the farming community? The memes, the tweets, the abuses, the anti-national tirade against them. About these very people, please check up the social media, check up the 2021-22 period. You can't hide it. And they are the persons calling us the anti-national. They have said it about this whole community so many times. And I would like to throw a counter challenge. Tell me one example where the Honorable Prime Minister or the Honorable Home Minister intervened at that time when their chosen agents were abusing this very community or this very farming samudaya. I think that democracy requires a democratic response. That democratic response may be a little late in coming, but come it will. It will demonstrate that BJP's sinister strategy of threatening, of terrorizing and trying to torment Rahul Gandhi ji is going to make him more muscular and more mighty. It will show that this government, this ruling party is clearly instigating, inciting and igniting hatred, a terrible invitation to violence against a constitutional leader of the opposition. This is the tragedy of Indian democracy. It is of course a tragedy of the ruling party, but above all it is a tragedy of the Indian democracy. And I would end by repeating that there may be a slight delay because of the yantra tantra which you are used to using, but let me assure these miscreants, these people who don't deserve to hold constitutional positions, that judgment day is not far away. Thank you. देखिए, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसका पूरा वार्तालाप यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है, न वो डिटेल्स देने की आवश्यकता है, लेकिन वो प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गई है। हम कहाँ जाएंगे, क्या संहिता का इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार से कंप्लेंट होगी, किस प्रकार से एफआईआर होगा, ये जघन्य अपराध है। आप अगर ऐसा बोल के देखिए मोदी जी के बारे में, वो तो आपको एयरपोर्ट से उठा के किसी और जेल में बिना किसी कारण के डाल देंगे। सिंघवी साहब इधर, सिंघवी साहब एक कर, सिंघवी साहब इधर 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 बाएं साइड इधर। अच्छा सर, एक करके आज रवनीत बिट्टू ने एक वीडियो जारी किया अपने बयान का। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और पन्नू दोनों एक भाषा में बोल रहे हैं, एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको टेररिस्ट कहा है, क्योंकि पन्नू एक टेररिस्ट है, इसको सरकार मानती है, और राहुल गांधी और वो एक दूसरे का की भाषा में बोल रहे हैं, इसलिए हमने उनको टेररिस्ट कहा है। इसलिए खड़गे साहब बताएं कि मैंने क्या गलत कहा है। तो हम बता ही रहे हैं आपको। मैं आपको टेररिस्ट बुला लूँ इसलिए जिससे आप किसी से बात कर रहे हैं वो दूसरा आदमी टेररिस्ट है और आप बात करें तो आप भी टेररिस्ट हो गए। और मैं अगर टेररिस्ट बुला लूँ आपको तो आप क्या करेंगे? कोई टेररिस्ट, आतंकवादी बिट्टू साहब की डिक्शनरी में बहुत छोटा शब्द होता होगा, शायद वो इन लोगों के साथ रहते होंगे इसलिए को शब्द का बड़ा नहीं लगता, लेकिन राहुल गांधी के लिए एक आक्षेप है, एक बहुत बड़ा जबरदस्त आक्षेप और आरोप है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने टेररिस्ट कह दिया, आतंकवाद, और उसमें आपने एड इंसल्ट टू इंजरी,
आप उसके बाद पूछ रहे मैंने क्या कहा, आतंकवादी कह दिया, संवैधानिक पोजीशन को, और पूछ रहे क्या कहा मैंने। तो इसका जवाब तो मैं समझता हूं कानूनी प्रक्रिया से मिलेगा, कड़ा मिलेगा, सीधा मिलेगा, संक्षिप्त मिलेगा और ठोस मिलेगा, और थोड़ा दर्दनाक भी मिलेगा। सर, आप लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि जिस तरह के बयान राहुल गांधी को लेकर आ रहे हैं, राहुल गांधी को थ्रेट भी है, तो क्या आप लोग उनकी सुरक्षा को लेकर भी सरकार से कोई मांग करते हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इस तरह के बयान बार बार राहुल गांधी को देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, हम किसी से कोई भीख मांगने नहीं जाने वाले। समझ लीजिए हम और ये कुछ नहीं कहते हैं आज, इसका उत्तरदायित्व किसके पास है? विपक्ष के ऊपर है। इस देश में सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व विपक्ष के ऊपर दे दिया है। तो फिर आप क्यों बैठे सत्ता में, क्यों बैठे सरकार में? देश के कानून का जो मूल तत्व वो ये है कि आप सत्ता में हो या सत्ता में न हो, जो एक पब्लिक फिगर है, अगर उसको थ्रेट परसेप्शन है तो उत्तरदायित्व आपका बनता है। तो ये प्रश्न हमसे कैसे कर सकते हैं और हम जाके भीख मांगेंगे उनसे? सिंघवी जी, सवाल ये है कि एक सज्जन है जो कहते हैं, इधर सामने आपके। अच्छा, सॉरी, हाँ, मैं उधर देख रहा था। सर, सवाल मेरा ये है कि एक सज्जन है जो ये कहते हैं कि जुबान हम काट लेंगे राहुल गांधी का, काटने की धमकी वो देते हैं। सवाल इसमें ये है मेरा सर कि जो लोग कार्रवाई उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं, क्या आप मांग करते हैं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या वैसा कोई प्रावधान है? देखिए, जो लोग इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो जनता के कटघरे में खड़े हैं। दे आर स्टैंडिंग इन द बार ऑफ द पीपल इन अ डेमोक्रेसी दैट इज द बेस्ट जज एंड द हार्शेस्ट जज। पहला प्रश्न ये है। दूसरा, अभी तो उनके अगेंस्ट एक्शन शुरू नहीं हुआ है जिसने ये कहा है। उसके बाद अलग अलग नंबर आएगा, चाहे गणतांत्रिक नंबर आए चाहे कानूनी नंबर आए, नंबर सबका आएगा। सर, आप जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पे, क्या आप प्रदेश के स्तर पे भी, क्योंकि आज जैसे दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, क्या आप सब जगह करेंगे इसको पूरे देश में? और दूसरा ये कि पार्लियामेंटेरियन सिस्टम के अंदर भी, क्यों सिंस वो एलओपी हैं, तो क्या पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में भी कुछ इस तरह की गुंजाइश है जहाँ पे आप किसी कमेटी में, चाहे वो प्रिविलेज हो, एथिक्स कमेटी हो, वहाँ पर ये बात लेकर जाएंगे क्या? एटलीस्ट स्पीकर से। Basically, this without giving directions, spontaneous reaction already happened all over India. Today, yesterday, all over India, state headquarters and even district headquarters, our workers are agitating. They are in a more agitative. Certainly, the concern of the Congress party will reflect in coming days. Certainly. Mr. Singhvi, I just want to remind you about what happened with Pawan Kehra and the Assam police. Multiple FIRs were lodged and you finally got him relief from the Supreme Court. In this case, there have been various comments, as you say, and Mr. Venugopal says there's a conspiracy. Are you planning to take this legally, because can your state police at various, in say Karnataka or Telangana, attempt to do an FIR? How do you plan to do it? What is the process? See, I have already partly answered this question. You can take it that we are going to exercise all the legal options available to us. We are not here at liberty to share with you the details, what, when, how, where. But as I said, the process has even started since today morning. It takes time, no doubt, and it will be invoking all those provisions created for these offences, very serious nature of which is described and reflected in these statements. However, this does not mean what prevents the government of the day from taking this action. That is the real issue I am trying to say. It's a different whether Venugopal or Singhvi will take it. That's not the point. What is it that you are so polarizing in this country that this government cannot take cognizance through its police forces of such terrible acts and immediately put a stop to them? That is the real issue for the country.